Kailash Chaudhary ji ka. We extend a very hearty welcome to the Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Manoj Ahuja. Secretary, Department of Agricultural Research and Education, Dr. Himanshu Pathak. We also extend a warm welcome to the Chairperson, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, Government of India, Dr. T. Mohapatra. Secretary, IT, PG, RFA, Rome, Dr. Kent Nandozi. And Chairman, Trust for Advancement of Agricultural Science, New Delhi, Dr. R.S. Baroda. FAO Representative to India, Mr. Takayuki Hajiwara. We extend a very hearty and warm welcome to all the distinguished participants and delegates who have come from different parts of the world and, of course, India. आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं. The farmers are the conservers of agro-biodiversity. This symposium will encourage the countries to protect the farmers' rights and is aimed at sharing effective policies and best practices of implementing farmers' rights and thereby achieving the 2030 SDG goals and post-2020 global biodiversity framework. हमारा देश PPV एंड FR एक्ट 2001 के जरिए किसानों के अधिकारों के द्वारा किसानों को सशक्त करने में दूसरे देशों के लिए प्रेरणा की अलग जगा रहा है. भारत में किसानों के अधिकारों की प्रेरणा प्रज्वला ऐसी ही विश्व को रोशनी देती रहे. इसी मंगल कामना के साथ हमारा विनम्र निवेदन है माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे कि कृपया मणि दीपक को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें. आई रिक्वेस्ट द एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑन द डेस्क टू काइंडली accompany her for this inaugural ceremony. In India, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp, and which signifies the light of wisdom and knowledge. Bharat. Bha yani prakash, Rath yani लीन, यानी ऐसा देश जो प्रकाश में रत हो, प्रकाश से भरा हो. The श्लोक from Bhagavad Gita says, Chikirshur lok sangraham means wishing for the welfare of the world. Sarve bhavantu sukhinah. ये देश G20 की सुगंध से सुवासित है. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का उद्घोष यहाँ पर गुंजायमान है. The light signifies the knowledge and wisdom, and in India, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp. Asatoma sadagamya, tamasoma jyotirgamya, which means lead me from unreal to real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge and wisdom. हमारे देश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित किया जाता है. कहते हैं कि इससे सभी की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, माहौल ईश्वरीय हो जाता है. Thank you so much, Honorable President and the dignitaries on the desk. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया. May I now invite the Chairperson PPV and FR Authority Dr. T. Mohapatra to deliver welcome address. कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें. Very good morning to everybody. Chief guest of the inaugural program, Honorable President of India, Her Excellency Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji,
Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Sri Kailash Chaudhary ji, Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Sri Manoj Ahuja ji, Secretary, Department of Agriculture Research and Education, and Director General, Indian Council of Agriculture Research, Dr. Himanshu Pathak, former Secretary DARE and DG ICAR, and Chairman TAS, Dr. R.S. Barodaji, FAO representative in India, Sri Takayuki Hagiwara, Secretary, International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, Dr. Kent Nandoji, distinguished delegates from various contracting parties of the treaty, other foreign delegates, Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretaries, and other officers of the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture, and other ministries and departments of Government of India, distinguished senior scientists, science administrators, Deputy Director Generals, other officers of ICAR, Vice Chancellors of various universities, directors and scientists of various institutes, representatives of other organizations, namely CSIR, DBT, NBA, NIF, etc., Indian delegates for the Farmers Congress, members of the PPVFR Authority, representatives of industry, non-government organizations, students, farmers, Plant Genome Saver awardees, representatives of press and media, ladies and gentlemen. On behalf of the organizers and on my personal behalf, I extend a warm welcome to each one of you to the first Global Symposium on Farmers' Rights. Farmers are the custodians of biodiversity, particularly the genetic resources for food and agriculture. It is thus essential that their right to seeds is protected and they are appropriately recognized. The Government of India, in a proactive manner, enacted the PPVFR Act in 2001 and established the PPVFR Authority to implement the provisions of the Act. It is therefore most appropriate that India is hosting this symposium and honoring the plant genome saviors with awards and honors today. We are highly fortunate to have the Honorable President of India to grace this occasion as the chief guest. Madam, you have worked tirelessly for the farmers and the neglected class of the society. You have dedicated your life for their welfare. The calmness in your face reflects the serenity of your mind and the compassion, the deep compassion that you have in your heart for the neglected class of people. We are highly inspired by your very presence in this conference. It is a memorable day for all the award-winning farmers. We extend a very warm welcome to you and express our sincere gratitude to you, ma'am, for your gracious presence. We have with us Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Sir, it was your proposal in the 9th GB of the ITPGRFA held last year at New Delhi to hold this global symposium on farmers' rights. This symposium is now being held under your overall guidance and leadership. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and under your able guidance, Indian agriculture is performing exceedingly well. Despite COVID, India exported more than $50 billion worth agri-products last year after freely feeding more than 800 million people for months. Sir, I welcome you and thank you very much for your kind presence to preside over the inaugural session. I welcome Sri Kailash Chaudhary ji, who always talks about the farmers and takes keen interest to solve their problems. Sir, I thank you very much for being here in this particular program. Sri Manoj Ahuja has been a pillar of support and encouragement. Dr. Baroda has been a keen observer of all that which is happening with regard to farmers and their activities, and he has supported immensely in this particular program. Dr. Pathak and his dedicated team have provided all the possible support along with this venue. Dr. Hagiwara, FAO India Office, Dr. Kent, Secretary, ITPGRFA,
have been at the core of organizing this particular symposium. I wholeheartedly thank all of you and welcome each one of you to this international program. I also extend warm welcome to all other dignitaries, delegates, invitees, representatives of industry, NGOs, other government departments, and media who have joined this program. मैं तहे दिल से जितने किसान मित्र यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग इतने भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और विशेष रूप में सारे किसान मित्र जो आज अवार्ड से नवाजा जाएंगे उनको बधाई देता हूँ. The first global symposium on farmers' rights provides an exceptional platform to discuss and brainstorm solutions to the problems which farmers have been facing for quite a long time with regard to seeds and the seed system. Throughout the next few days, we will hear from the experts, researchers, policymakers, and most importantly, the farmers themselves. Their experiences, insights, and wisdom will be valuable to chart a new course to decide the future of farmers' rights and the way we can facilitate the conservation of seeds and their varieties in future. Let me once again welcome one and all and express my sincere appreciation for your presence here today. Your commitment to the cause of farmers' rights is a testament to your dedication to building a better world. I have no doubt that our collective efforts in the coming days will yield innovative solutions and inspire positive actions that will benefit not only farmers but whole of the humanity in India and across the globe. Jai Bharat. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है. ये हॉलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है. ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा. क्या है, आगे का रोड मैप क्या है. May I now request Secretary DAFW, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja, to give a brief introduction of Global Symposium. सचिव महोदय श्री मनोज आहूजा इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे. आइए सुनते हैं. धन्यवाद और आप सबको नमस्कार. Her Excellency Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable President of India, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Kailash Chaudhary ji, Secretary DARE, Dr. Himanshu Pathak ji, Chairperson Protection of Plant Varieties and Farmer Rights Authority, Dr. Trilochan Mahapatra, Chairman TAS, Dr. Paroda, Representative of FAO in India, Mr. Hagiwara, and Secretary, International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Dr. Nandozi Kent, distinguished delegates from various countries and contracting parties of the treaty, Mere Kisan Mitra, officials and scientists from different ministries and organizations, and friends from the media. Ladies and gentlemen,
it gives me great pleasure to extend a warm welcome to this first global symposium on farmers' rights. All of us are aware that each farmer is a scientist, and we need to recognize this. The ITP-GERFA, which is also known as the Plant Treaty, is a legally binding international agreement which was adopted in 2001 under the auspices of the Food and Agricultural Organizations of the United Nations. The primary aim of the treaty is to ensure conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, and to promote fair and equitable sharing of benefits derived from their use. A critical component of the treaty is the recognition and protection of farmers' rights. And it is with great pride I say that India has been the first country in the world to include farmers' rights in the context of plant variety registration through its PPVFR Act 2001. The Global Symposium on Farmers' Rights, to be hosted from 12th to 15 September, is organized by the International Treaty on Plant Genetics Resources for Food and Agriculture. It's a significant international event hosted by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, through Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authorities in partnership with ICAR, IARI, and NBPGR. This symposium represents a crucial gathering of stakeholders from around the world to discuss and deliberate upon the preservation and promotion of farmers' rights in the context of agricultural biodiversity, farmers' rights, and food security. Farmers play a very crucial role in maintaining biodiversity and ensuring global food security. The vital role of local and indigenous communities and farmers in conserving, preserving, and developing plant genetic resources for food and agriculture is enshrined in Article 9 of the International Treaty. In recent years, the importance of implementing farmers' rights in the domain of plant variety protection and related intellectual property rights has been a consistent theme at the sessions of the governing body of the International Treaty. In fact, in the 9th session of the governing body held in New Delhi in 2022, actually paved the way for organization of this first global symposium on farmers' rights. The Global Symposium on Farmers' Rights is attended by nearly 700 delegates, including 150 foreign participants, 175 farmers and awardees, and 250 representatives from government ministries and departments, experts, public sector research institutions, industry, and NGOs. And they seek to discuss and deliberate on raising global awareness about the importance of farmers' rights in the context of agricultural biodiversity and food security, facilitate the exchange of knowledge and experience, best practices related to the implementation of farmers' rights at the national and international level, encourage discussions and debates on policy frameworks and strategies to strengthen farmers' rights and their role in safeguarding genetic resources, sensitization to empower farmers, indigenous communities, and relevant stakeholders in understanding and asserting their rights, and also provide a platform for networking and collaborating amongst governments, civil society organizations, farmers' groups, and the private sector to enhance the protection of farmers' rights. These areas would be addressed through 6 technical sessions and 2 special events during the symposium. The Global Symposium on Farmers' Rights, being organized in that sense, is a trend-setting event and will show the light to different countries across the globe as to how to move ahead in this direction. It will provide a significant opportunity to advance the protection and promotion of farmers' rights, particularly in the context of agricultural biodiversity and global food security. I once again welcome all of you to this global symposium and thank the Honorable President for her kind presence in this event. Jai Hind. धन्यवाद सचिव महोदय श्री मनोज आहूजा। माननीय प्रधानमंत्री जी धरती पुत्रों, अन्नदाता किसानों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशन में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी किसान, खेत खलिहान के कल्याण के लिए श्रद्धा से संकल्पबद्ध हैं।
हम निवेदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की कृपया हमें शुभकामनाएं दें, हमें संबोधित करें। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी टू काइंडली एड्रेस अस। किसानों के अधिकार विषय को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हम सब के मध्य हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति यह निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होती है। और आज महामहिम जी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमको समय प्रदान किया और मार्गदर्शन के लिए वे यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सब प्रतिनिधियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, हमारे सचिव मनोज आहूजा जी, एफएओ के प्रतिनिधि श्री टाका यूकी जी, आईसीआर के डीजी डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, एफएओ के सचिव डॉक्टर कैंट नंडो जी, आईसीआर के पूर्व डीजी आदरणीय परोदा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी राजदूत, राजनयिक गण, संधि के अनुबंध से संबंधित सभी देशों के प्रतिनिधिगण, किसान मंत्रालयों और संगठनों के उपस्थित अधिकारीगण, हमारे सभी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और मीडिया के बंधु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का इस वैश्विक संगोष्ठी में भारत सरकार और केंद्रीय किसान मंत्रालय की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन है। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं तो हमें प्रगति प्रदत्त अमूल्य खजाना विविध पौधों की किस्मों जो न केवल हमें जीवित रखती हैं बल्कि पर्यावरण को भी समृद्ध करती हैं। कृषि जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए एक महती आवश्यकता है और भारत सरकार इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित हैं, जिनमें अधिकांशतः गत वर्ष 2022 में भी दिल्ली आए थे, जब भारत ने ITPGRFA की गवर्निंग बॉडी की 9वीं बैठक की मेजबानी की थी। उस वक्त भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO को फसलों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों को लेकर
एक वैश्विक संगोष्ठी की मेजबानी का प्रस्ताव दिया था, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला आयोजन हो, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रस्ताव को वैश्विक समुदाय ने स्वीकार किया और आज वह विचार इस संगोष्ठी के माध्यम से मूर्त रूप ले रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत सहमत सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। वह इसके अक्षरशः पालन में विश्व में सर्वोपरि कार्य कर रहा है। यह तथ्य बताना जरूरी है कि भारतीय संसद द्वारा पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में अधिनियमित राष्ट्रीय कानून से बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित है। इस कानून का अधिनियमन के बाद से भारत सरकार ने कानून में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। भारत के पौधा किस्म संरक्षण ढांचे की विशेषताओं में से एक इसका किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अधिनियम किसानों की पीढ़ियों के अनवरत प्रयासों से पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व विकास में किसानों की अमूल्य भूमिका को मान्यता देता है। यह एक्ट किसानों के खेत में बचाए गए बीजों को बचाने, उपयोग करने, आपस में बांटने, साझा करने और बेचने का भी अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान किसानों को स्थानीय ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए उनकी स्वायत्तता संरक्षित करते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देता है। भारत की समृद्ध कृषि विरासत हमारे किसानों के प्रयासों के कारण फली फूली है, जिन्होंने सावधानी पूर्वक कई पौधों की किस्मों का पोषण और विकास किया है। पौधों की ये किस्में न केवल जीविका का स्रोत हैं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के बीच गहरे संबंध का जीवंत प्रमाण है। एक सरकार के रूप में हम इन किस्मों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को समझते हैं वे फलते फूलते रहें। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी कृषि नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे किसान हमारी भूमिका के संरक्षक हैं। उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। ऐसा हमेशा से ही भारत का प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझती है। वह किसानों को उनकी आजीविका सुरक्षित करने और उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। हम सभी को यह याद रखना होगा, कृषि जैव विविधता का संरक्षण, पौधों की किस्मों की सुरक्षा, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा अलग अलग लक्ष्य नहीं है, बल्कि समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के अभिन्न अंग हैं। हम इन जिम्मेवारियों को स्वीकार करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे ताकि हमारी समृद्ध कृषि विरासत आने वाली पीढ़ियों तक फलती फूलती रहे। पौधों की विविधता के संरक्षण में हुई सकारात्मक प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। पौधा किस्म अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना विशेष रूप से पारंपरिक और स्वदेशी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियान व क्षमता निर्माण की पहल किसानों के प्रजनकों के बीच उनके अधिकारों और जिम्मेवारियों के बारे में समझ बढ़ा सकते हैं। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है जो खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि की भावना को परिपूर्ण करता है। यह राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। 2005 में स्थापना के बाद से ही प्राधिकरण के पौधों के किस्मों को पंजीकृत करने, हितधारकों को आपस में जोड़ने, बीज में क्षेत्र में नई विधा को प्रोत्साहित करने, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण करने और प्रजनकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए
एक राष्ट्रीय जीन कोष की स्थापना की गई है। किसानों समुदायों के योगदान को स्वीकारने के लिए पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण किसानों की किस्मों व उनके द्वारा तैयार किस्मों का रजिस्ट्रेशन सतत कर रहा है। किसानों में जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस वैश्विक संगोष्ठी के माध्यम से इन सब विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही कार्य योजना, पारंपरिक कृषि जैव विविधता संरक्षण और फसलों के इन पारंपरिक किस्मों पर दुनिया भर के किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के पोषित लक्ष्य की ओर निष्कर्ष निकलेंगे। मैं इस अवसर पर इस वैश्विक संगोष्ठी की शानदार सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर महापात्रा की अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए अपनी मंगल कामना प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल मिनिस्टर। कोई भी कार्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं किया जाता है, वो अंतरात्मा की आवाज़ और जो कर्म करते रहने की जो भारतीय संस्कृति है उसके आदर्श का अनुपालन करते हुए किया जाता है। लेकिन अगर पुरस्कार हासिल होता है तो उत्साहवर्धन अवश्य होता है और दूसरों के लिए प्रेरणा की मशाल अवश्य जलती है। Every year, farmers and communities engaged in conservation of PGR are awarded for their exemplary and remarkable achievements. May I request the Honorable President, Madam, to kindly present the awards to the award winners. माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। Plant Genome Savior Community Award 2020-21 consisting of cash prize of 10 lakhs, citation and a memento। और ये पुरस्कार हासिल हो रहा है यहाँ मोगी माता स्थानिक बियाने संवर्धन समिति नंदुरबार महाराष्ट्र for contribution towards biodiversity conservation and promotion of 108 land races in millets, bean, cucurbits, registration of 5 sorghum varieties with PPV FRA. Dalpur Sri Sri Gyanananda Saraswati Ashram, Bakura, West Bengal for contribution towards conservation and promotion of land races in rice, medicinal plants, millets, forages and vegetables. Lychee Growers Association of Bihar, Muzaffarpur, Bihar for excellent contribution towards conservation of 12 germplasms, cultivation and promotion of 8 commercially important cultivars in lychee. Plant Genome Savior Community Award 2021-22 Malabar Kaipat Farmers Society, Kannur, Kerala for the outstanding contribution of conservation, cultivation and promotion of saline tolerant rice land races.
Kala Zira Utpadan Sangh, Kinnur, Himachal Pradesh for contribution towards conservation and promotion of medicinal seed spice Kala Zira. Bhagalpuri Katarni Dhan Utpadak Sangh, Bhagalpur, Bihar for contribution towards conservation and promotion of the unique aromatic rice land race. Plant Genome Savior Farmer Reward 2020-21 consisting of cash prize of 1.5 lakh citation and a memento, Sri Raghubir Nandam Krishna, Andhra Pradesh, for his conservation efforts of traditional varieties in rice, banana, tubers, pulses, etc. and sharing of germplasm with ANGRAU University. Sri Balinpatra Demaji Assam for his conservation efforts in traditional rice varieties. जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें, शुभकामनाएं दें। Sri Bijoy Lakhi Pabe Dhemaji Assam for his conservation efforts and sharing of plant genetic resources in rice and king chili. Sri Arjun Singh, Rohtas, Bihar for development of farmer varieties in rice, turmeric, conservation and promoting improved farming techniques and extension activities. Sri Ramakant Ramachandra Hegde, Uttar Kannada, Karnataka for his conservation and development of traditional variety in black pepper and sharing of germplasm with University of Horticultural Sciences at Bagalkot, Karnataka. Sri B.K. Deva Rao, Dakshin Kannada, Karnataka for his conservation efforts for the plant genetic resources like 117 traditional rice varieties, 15 jackfruit, 5 in nutmeg and 6 in cassava. Sri Salim P.M. Wayanad, Kerala for his conservation efforts of traditional varieties in cardamom, banana and other crops like vegetables, tubers, fruit plants. Sri Praseed Kumar Thail, Wayanad, Kerala for the conservation of traditional varieties like 163 in rice, banana, turmeric and other crops like jackfruit, coconut and areca nut. Sri Sunil Kumar M. Wayanad, Kerala for his conservation efforts for traditional varieties like 106 varieties in rice, banana, pepper and other crops, sharing 20 rice germplasm with the University of Palakkad, Kerala. अब बारी आती है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवॉर्ड 2021-22 श्री विनोद E.R. Thrissur, Kerala for his extensive contribution towards conservation of land races like 53 in cassava, turmeric, sweet potato and sharing of germplasm with the University of Kerala. Sri John Joseph, Kozhikode, Kerala for the conservation of plant genetic resources of nutmeg varieties in black pepper, turmeric and other medicinal plants. Sri Dilip Kumar Singh, Rohtas, Bihar for his work as farmer breeder for development of several crop varieties, brinjal, tomato, coriander. Sri Satyadev Singh, Munger, Bihar for his contribution as farmer breeder and plant variety registration for chickpea masoor with PPV FRA. Sri Arjun Mandal, Jamui, Bihar for his enormous contribution towards conservation and improvement of medicinal crops like tulsi and other varieties in ashwagandha.
Sushri Lahiribai Padhya, Dindori, Madhya Pradesh, for her contribution towards conservation and promotion of 150 traditional land races in finger millet. She has become the brand ambassador of millets in India. Shri Annaki, brand ambassador. Shri Gopal Dutt Upreti Almora, Uttarakhand, for his work towards conservation of traditional coriander vegetables in Kumaon Hills of Uttarakhand. Plant Genome Savior Farmers Recognition 2020-21, consisting of prize 1 lakh, citation and memento. Sushri Parappi A, Thiruvananthapuram, Kerala, for her contributions towards conservation of pineapple, landrace and others in banana, tapioca and minor tubers. Sinimai Mondal, Nadia, West Bengal, for his efforts towards conservation, promotion and cultivation of 15 traditional varieties in rice. Plant Genome Savior Farmers Recognition 21-22, Shri Garib Das, Paparola, Himachal Pradesh, for conservation of traditional variety and plant genetic resource in cucumber that are being evaluated for breeding of cucumber varieties suitable for hill agriculture. Shri Kishan Suman, Kota, Rajasthan, for the development of Sadabahar variety of mango that is regular bearing and dwarf in stature. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, अपने कर कमलों द्वारा इन सभी अन्नदाता भूमि पुत्रों को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। May I now request the Honorable President of India to kindly inaugurate the Plant Authority Bhavan by pressing the remote button. जी हाँ, this building is having ground plus 8 floors and 2 basements. ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है 11 यूनिट्स के साथ, जहाँ PPV FRA के एम्प्लॉयज़ तो रहेंगे ही, साथ ही ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस हो तो उसके दौरान किसानों के भी रहने की यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। May I now request you, Madam, to kindly launch the online portal for plant variety registration. इसका उद्देश्य है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। दिस ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड for transparency with paperless process which will benefit all the farmers, stakeholders, communities, industries and universities. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय आपका। हम भारतवासियों का ये परम सौभाग्य है कि माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जैसा अत्यंत गौरवमय व्यक्तित्व इस देश की माननीय राष्ट्रपति हैं। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया की अत्यंत गरिमामय उपस्थिति इस बात की परिचायक है कि वे किसानों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के प्रति कितनी आस्थावान हैं। May I request the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, to kindly address us, guide us and show us the way forward. जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary ji, Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja ji, Secretary, Department of Agriculture, Research and Education and Director General of ICAR,
Dr. Himanshu Pathak ji, Chairperson, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, Dr. Trilochan Mahapatra ji, Secretary FAO, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Dr. Kent Nanadoji, Chairman, Trust and Advancement of Agriculture Sciences, Dr. R.S. Parodaji, Mr. Takayuki Hagiwara, FAO, representatives to India, distinguished delegates, farmers, scientists present here. Good morning to all of you. It gives me immense pleasure to attend this August gathering for the Global Symposium on Farmers' Rights, which is taking up the issues closest to my heart. Since my childhood, I have been taught to live in harmony with nature. The wide range of biodiversity, wildlife, and varieties of exotic plants and creatures have always enriched our lives and made this planet beautiful. In this context, I say with conviction that our farmers since the beginning of civilization are the real engineers and scientists. They have harnessed the energy and bounties of nature for the benefit of humanity. A Nobel laureate and economist, while visiting a village in Bihar, once remarked, "Indian farmers are better than scientists." I entirely agree with this statement, as in agriculture, we have seamlessly blended tradition with technology. As you all know, agriculture is the first vocation known to humankind, and it thrived on agrobiodiversity that Mother Nature has given us. The farming fraternity of the world is its foremost conserver. You are the true guardians of crop diversity. Though I know that we have lost many plants and species, we all must appreciate your endeavor to protect and revive many varieties of plants and species whose existence is crucial to all of us. Dear delegates, I am happy that the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture has chosen India as the venue of the first global symposium of farmers' rights, and appropriately so, as India is an ancient civilization where our traditions, culture, and agriculture are part of the same fabric. This is the land which has internationalized since ages the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning that the entire world is one family. I welcome all of you to this sacred land which has abiding faith in well-being of every culture of the nature. Our ancient scriptures guide us with widely benevolent teachings of Sarve Bhavantu Sukhino, Sarve Santu Nuramaya, Sarve Bhadrani Paschantu, Ma Kasit Dukho Bhagya Bhavet. It means, may all be prosperous and happy, may all be free from illness, may all see what is spiritually uplifting, and may no one suffer. According to the International Union for Conservation of Nature, India is a mega diverse country with only 2.4% of the world's land area, but accounts for 7-8% of all recorded species of plants and animals. There are about 45,000 species of plants, which is about 7% of world's total. In terms of biodiversity, India ranks as one of the nations endowed with widest range of plants and species. This rich agrobiodiversity of India has been a treasure trove for the global community at large. Our farmers have toiled and enterprisingly conjured local varieties and plants. Domesticated wild plants and nurtured
traditional varieties that have provided the building blocks for different crop breeding programs. This has ensured the food and nutritional security for human beings and animals. The area-specific varieties of crops are closely associated with society and culture and often contain medicinal properties. Agricultural research and technology development has enabled the country to multiply product of food grains, horticulture, fisheries, milk, and eggs many times since 1950-51, thus making a visible impact on the national food and nutrition security. The efforts of our agro-biodiversity conservers and industrious farmers, scientists, and policymakers, coupled with governmental support, have played a key role in giving fillip to multiple agricultural revolutions in the country. All of them are worthy of our unreserved praise and respect for achieving this incredible feat. This is important as in the raging debate of food sovereignty versus food security. I firmly believe that the technology and science can serve as an effective protector and enhancer of heritage knowledge. Dear ladies and gentlemen, the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture signed in 2001 was one of the most important international agreements among member countries to conserve, use, and manage plant genetic resources for food and agriculture. For the first time, it talked about guaranteeing food security through conservation, exchange, and sustainable use of the world's plant genetic resources for food and agriculture. India had taken a lead in introducing the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001, which is aligned to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture to protect our farmers. My country provides a range of rights to farmers, including use, reuse, save, share, and sell the unbranded seeds of the registered variety. Besides, Indian farmers can register their own varieties which get protection. Such an act can serve as an excellent model worthy of emulation for the entire world. It gains further importance in the work of challenges posed by climate change and also to fulfill the sustainable development goals of the United Nations as our collective responsibility towards humanity. The climate change challenge has put an onus on conservation of our traditional farmers' varieties, including those of millets, which are not only endowed with inherent tolerance to various stresses on our ecosystem, but also hold within themselves the nutritional profile that could be the key in providing a solution to the food and health requirements of a large proportion of human and livestock population. The declaration of the year 2023 as the Year of Millets by the United Nations is a step in this direction. Dear delegates, this symposium, the very first of its kind in the world, provides a golden opportunity to the world's fraternity in realigning their priorities and programs according to the needs of humanity and to make a common commitment. I hope this symposium would be a milestone in further taking significant steps towards our commitment for fulfillment of farmers' rights world over. I am glad to learn that this event also includes various categories of awards for communities and individuals in recognition of their enormous contribution as savior of the plant genome. I have no hesitation in saying that by saving, preserving, and nurturing biodiversity, you are not only saving humanity but the entire planet.
I watched a powerful 3-minute film titled The Guardians of the Mighty Little Seeds. It begins as a seed aptly describes itself, saying, I am tiny, but I am mighty. I am tiny, but I give birth to so many. You, as the guardians of these little seeds, are vested with exceptional power and responsibility. I wish more power to you. हम भारत में किसानों को अन्नदाता कहते हैं। ये केवल भारत नहीं, पूरा दुनिया में जो किसान होते हैं, मानव संपदा को केवल नहीं, पशु संपदा को भी अन्न देते हैं। अन्नदाता अन्न देते हैं और हम उसको अन्न लेके जो भी काम करते हैं। आज अन्न है, इसीलिए ये तन है। ये तन है, इसीलिए बहुत सारे काम करने के लिए हम मन बनाते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, चाहे और फार्मास हो, कोई भी हो। इसीलिए अन्नदाता नमन होते हैं, नमस्य होते हैं। हम उनको नमन करते हैं। देश विदेश में, सारा दुनिया में अन्नदाता शायद 70% है। उनके अधिकारियों को रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके भविष्य को के लिए चिंता करना हम सबका काम है। आज इसी विषय पे सिंपोजियम हो रहा है। उनके, मुझे लगता है उनके भविष्य जब उज्जवल होगा, देश विदेश या दुनिया उज्जवल होगा, दुनिया की प्रॉस्पेरिटी होगा। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May I request you all to kindly rise for the national anthem of India, Rashtragan.